Kids, today we are doing learning science class 5 and another chapter number 8, volume, weight and density. Now in this chapter we study weight and volume, density, floating and sinking a ship in water. Okay, then start now. Measurement is the act of assigning numbers of certain qualities like weight, volume and density. Okay, weight. What is weight? Weight tells you how heavy or light something is. For example, rock. Rock is heavy while a feather is light. Okay. The standard unit of weight is kilogram or kilogram. We measure smaller weights in grams. Grams is form of G and kilogram is kg. The amount of liquid a container can hold is called its volume. A cup holds less water, a bucket holds more water. This is because the bucket has more volume. देखो कप छोटा होता है उसमें कम पानी आएगा, बकेट बड़ी होती है उसमें ज़्यादा पानी आएगा. तो दैट मीन्स क्या होगा, कप के कंपैरेटिवली बकेट का वॉल्यूम क्या होगा, मोर होगा. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर. Liquid in small quantity are measured in milliliters or ml. Liquids in large quantity measures in liters. Okay. Weight does not depend on size of the object. Weight किसी भी चीज के साइज पे डिपेंड नहीं करता है. Sometimes an object like cotton is huge but it has very less weight. अब बहुत सारी कॉटन का वेट अगर 1 kg है तो आयरन की कोई भी चीज होगी उसका वेट आयरन की चीज छोटी सी होगी और कॉटन बहुत सारी होगी. तो दैट मीन्स क्या है, however volume and weight are directly related to each other. क्योंकि जो कॉटन है वो बहुत ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा और वो स्पेस भी ज़्यादा लेगी, जबकि आयरन के कोई भी पीस या टुकड़ा लेंगे उसका वेट उतना ही होगा बट उसका वॉल्यूम कम होगा. टेक अ रॉक दैट वेट्स इन किलोग्राम. नाउ टेक फेदर दैट वेज इन किलोग्राम. अगर 1 kg किलो वो फेदर्स हैं तो वो बहुत सारे होंगे, जबकि कोई रॉक है वो फेदर्स देखने में बहुत सारे होंगे पर उनका वेट 1 kg है. रॉक देखने में छोटी सी होगी उसका वेट भी 1 kg है. दैट मीन्स वॉल्यूम विच है. अब आप बताओ विच हैज मोर वॉल्यूम और टेक्स अप मोर स्पेस. फेदर हैज मोर वॉल्यूम. देखो वेट ऑफ द रॉक एंड द फेदर इज सेम. वेट दोनों का सेम है बट द फेदर स्पेस ज़्यादा ले रही है तो उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा. अब रॉक है स्पेस कम ले रही है तो उसका वॉल्यूम भी कम होगा. व्हाट हैपन इफ वी टेक फेदर दैट 2 kg वेट, द वॉल्यूम ऑफ फेदर विल इंक्रीज. अगर 2 kg फेदर ले लिया हमने तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, मतलब और देन द वेट व्हेन द वेट ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीज, वेट बढ़ गया तो वो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा. टू सब्सटेंसेस मे हैव द सेम वेट बट डिफरेंट वॉल्यूम. फेदर बहुत सारी जगह लेंगे, बहुत सारा वॉल्यूम होगा, उनका स्पेस भी बहुत ज़्यादा होगा, वॉल्यूम भी. और रॉक का वॉल्यूम भी डिफरेंट होगा और वेट सेम होगा. Take another example. If you take a bundle of cotton and iron, each of the same weight, they have different will they will have different volume. The volume of the cotton will be more than the volume of iron. Weight same होगा but volume different होगा. Density. So different substance with the same weight have different volume. अलग अलग substance का weight same हो सकता है but उनका volume different होगा. For doing a comparison between weight and volume, we use another quantity called density. अब हम एक अलग क्वांटिटी वो लेते हैं, उसे डेंसिटी कहते हैं. डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टेल्स अस
हाउ द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन अ सब्सटेंस, कि किस तरह सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं. द मोर क्लोजली मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड इन अ स्पेस, द डेंसर the substance. The molecules in a rock are packed close together, while the molecules in water are closely packed. They are more spread out. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं. द मॉलिक्यूल्स इन एयर आर वेरी लूजली पैक्ड, क्योंकि वो हर जगह स्प्रेड हो जाती है, मोर फ्रीली होती हैं. दे कैन मूव अबाउट मोर फ्रीली, बहुत जल्दी से एयर में फैल जाती हैं. इन जनरल अ सॉलिड हैज़ मोर डेंसिटी दैन अ लिक्विड, अ लिक्विड हैज़ मोर डेंसिटी दैन अ गैस. अब डेंसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? डेंसिटी इज डिफाइंड एज द वेट पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ substance. We also consider density is equal to weight upon volume. देखो, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सॉलिड के हैं, ये लिक्विड के हैं, और ये गैस के हैं. सॉलिड हैज मोर डेंसिटी देन लिक्विड, लिक्विड हैज मोर डेंसिटी देन gas. Thus, the heavier an object, the higher in its density. If the object is lighter, takes up a lot of space, the density is lower. Okay. Now see the pictures. This is the activity to study whether objects float or sink in water. Objects that have a density higher than water sink, while the ones with density lower than the water float on the surface. The density of iron is higher than that of water. So an iron nail sinks into the water, whereas a piece of wood floats on it because wood is less dense than the water. देखो, आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो इसलिए वो सिंक करेगा. सो एन आयरन नेल सिंक्स इनटू द वाटर, आयरन नेल सिंक कर जाएगी. आयरन और एक जो वुड का पीस होता है वो फ्लोट करता है वाटर पे, क्योंकि वुड की लेस डेंसिटी होती है वाटर से. तो फाइंड आउट वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक इन वाटर. अब देखते हैं कि किस तरह से करता है. वी नीड टू नो द डेंसिटी ऑफ वाटर. हमें पहले पता होना चाहिए कि वाटर की डेंसिटी क्या है. द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 kg per liter. An object that has a density of more than 1 kg per liter sinks in water. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 1 kg पर लीटर से ज़्यादा है तो वो सिंक करेगा. एन आयरन नेल, a glass marble and a steel spoon will sink in water because the density of iron, glass and steel is more than 1 kg per liter. Okay. An object that has density of less than 1 kg, जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 1 kg पर लीटर से कम, इससे कम होती है, लेस देन है ना, तो वो वाटर पर फ्लोट करेगा. अ पीस ऑफ वुड, रबर बॉल, स्पॉन्ज will float on water because the density of wood, rubber and sponge is less than 1 kg per liter. When you drop a ball into a water, this is the picture. When you ball drop into the water, it floats on the water. Now try forcing the ball. अब आप फोर्सफुली अब बॉल को इसमें वो कर रहे हो, फोर्सफुली कर रहे हो, तो क्या हो रहा है? You will feel like a kind of force. आप ऐसे पुश करें तो फोर्स हो रहा है और बॉल पुश अपवर्ड ऊपर की तरफ आ जाती है. व्हेन यू स्टॉप पुशिंग द बॉल, अगर आप छोड़ देते हो बॉल को तो वो वापस सरफेस पर फ्लोट करना शुरू कर देती है. द फोर्स दैट पुशेस द बॉल अपवर्ड्स इज कॉल्ड बायंट फोर्स और अप थ्रस्ट कहते हैं इसे. कि जो आप फोर्स लगा रही हो फिर भी बॉल वापस अपवर्ड आ रही है, तो दैट मीन्स बायंट और अप थ्रस्ट फोर्स. वाटर पुशेस ऑब्जेक्ट अप, वाटर क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है विद अ बाइंड फोर्स. इट इज दिस फोर्स दैट मेक्स द बॉल, इसी फोर्स की वजह से बॉल क्या करती है? वाटर में फ्लोट करती है. ओके, दिस इज द पिक्चर. द एंशियंट ग्रीक साइंटिस्ट आर्किमिडीज फाउंड that an object to float in water, the weight of the water that the object displays when it is placed in water must be greater than the weight of the object itself.
The object pushes or displaces an amount of water with the same weight as the object. Archimedes found that upthrust is equal to the weight of water displayed by an object. This is known as the Archimedes principle. ये जो अपथ्रस्ट इक्वल होता है वाटर वेट ऑफ द वाटर जो ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेड मतलब हटाया जाता है. दिस इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. व्हेन यू प्लेस अ प्लास्टिक टॉय और डक इन अ बोल ऑफ वाटर, द टॉय डक एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट क्योंकि वो फ्लोट कर रही है. विद पुशेस इट अपवर्ड. दिस फोर्स इज क्रिएटेड बाय वाटर. अब व्हाई डज द वाटर पुश द टॉय अपवर्ड? The toy displaces or pushes aside of some water. When it is displayed in water, the amount of water the toy displaces is equal to its volume. When you take the toy out of the water, it feels lighter. This is because when the duck is in water, क्यों हो रहा है? क्योंकि duck water में थी. The water pushes upward on it. Water उसको upward ऊपर की तरफ push कर रहा था, reducing its overall weight. The upward force or buoyancy acting on the toy is equal to the weight of the water it displaces. If the buoyant force is greater than or equal to the weight of the toy, तो अगर क्या है buoyant force greater than या equal है weight toy के weight से, the toy will float. However, if the buoyant force is less than the weight of the toy will sink. To conclude, Archimedes' principle tells us that when an object is placed in water, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर में प्लेस किया जाता है, इट फील्स लाइटर बिकॉज द वाटर पुशेस इट अपवर्ड, क्योंकि वाटर उसे ऊपर की तरफ पुश कर रहा है. द मोर वाटर द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस, द स्ट्रोंगर अपवर्ड फोर्स एंड द मोर इज लाइकली टू इट इज टू फ्लोट. A ship in water. We know that anything that is heavier than water sinks. However, heavy ships and boats do not sink to the bottom of the water. They float on water. If a large object like a ship is lowered slowly into the water, it displaces more and more water until the weight of the water displays equal and weight of the ship, at which point it will stop dropping and float. अब जो ये शिप है, ये डिज़ाइन कैसे होता है? शिप इज़ डिज़ाइन इन सच अ वे दैट इट डिस्प्लेसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. क्योंकि वो शिप किस तरह से वो डिस्प्लेस किया जाता है, क्योंकि उसको बहुत बड़े शिप जो है वो बहुत सी में ओशंस में ही चलते हैं. द वेट ऑफ द वाटर दैट द शिप डिस्प्लेसेस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द शिप itself. This means that the upward buoyant force acting on the ship is equal to its weights. When what helps in keeping the ship float? It shape. What helps in keeping the ship afloat is its shape and weight. What is inside? मतलब उसमें क्या होता है कि क्या चीज़ हेल्प करती है शिप को फ्लोट करने पे? तब ये बताएंगे. Ships are not solid pieces of steel. Ships. This is There is air inside in a ship. अब शिप कोई सिंपल सॉलिड स्टील के पीसेस से नहीं बने होते. उनके अंदर एयर फिल की जाती है. द एयर दैट इज इनसाइड अ शिप इज मच लेस डेंस देन द वाटर. दैट इज व्हाट कीप्स द शिप फ्लोटिंग. व्हेन अ शिप सिंक्स इट इज बिकॉज वाटर एंटर द शिप. जब शिप के अंदर पानी भर जाता है तो वाटर शिप सिंक कर जाता है. द वाटर फोर्सेस आउट द एयर. और वाटर क्या करता है? फोर्सफुली एयर को बाहर निकाल देता है, मेकिंग द डेंसिटी ऑफ द शिप ग्रेटर देन द दैट ऑफ द वाटर. शिप की जब डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वो वाटर से तो वो सिंक हो जाएगा. अगर शिप की डेंसिटी लेस है तो वाटर शिप फ्लोट करता है. बट अगर शिप की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी
वाटर से तो वो सिंक करेगा। ओके, दिस इज द एक्सरसाइज। Okay, now you can do this, and these are the question answer. And now please study as soon as possible, and may please watch the video many times, then you can clear. You have must have to clear the concepts. If you have any problem, you can text me. And now please share, subscribe, like, share and subscribe my videos. Bye bye.